चल ऐसे let's pretend that we've just cracked the joke. We're coming into this. Okay, let's go. टाइम अनाउंसमेंट गांड फटी टाइम अनाउंसमेंट अभी का मेकिंग कर रहा बेंच So from the very beginning, I was clear that Honors Campus Placements needed to be a story about a group of friends, and the characters had to be relatable. Average, failure, and overachiever. These are people that every group had in every college. We wanted our viewers to relive the entire process and not just one part. Why did you come up with that anthem wala part? Because Campus Placements was told as a story, I felt the opening had to be cinematic. It had to open with a song. What better way to go about it than an engineering anthem? When you're doing that slow motion walk, no, it's almost like the whole world is just watching. You use a double speech track and while listening to it, you try to listen. That's what you did, right? Yeah, that's what. Yeah. Cool. बंक मारा क्यों हर रोज जीपीए अब मेरा काफी लो पेपर नहीं उड़ा काउंटर स्ट्राइक या डोटा डालूं मैं अपनी सीवी में क्या टिप वन हैंड में प्रो ये सुन के कौन देगा जॉब इसको एमटेक यहीं से ना करनी पड़ जाए शायद से मैं भी को कांड गाए लेकिन सबसे ज्यादा ये बात सताए नहीं सीखा गिटार I would also like to talk about Mihir. I feel did a brilliant job with the packaging. He really captured the entire crux of the sketch in that few seconds of packaging. एक्शन जनता सुन लो एक बार सब ध्यान है सबका ध्यान है अच्छा हम शूट कर रहे हैं ऑनेस्ट कैंपस प्लेसमेंट Kumar Varun is one of my favorite actors. Rahul के लिए थोड़ा easy था because he had to play himself. He's just so good at whatever he does in real life. Big fans of Naveen Polishetty and Utsav. Yeah. Founders of AIB. Yeah. Bowling थोड़ा weak है यार, मतलब weak है यार, मतलब समझना है यार. और पिच का पता नहीं रे. हम लोग जो ऑडी वाला सीन शूट कर रहे थे तो मैं इमोशन में फ्लो में कैरेक्टर में आके मतलब जाके मैंने ऑडी को लात मार दिया एंड जो ऑडी का ओनर था वो बैठा था वहाँ पे गाड़ी में जो ड्राइवर मुझे लगा कि वो किसी जूनियर आर्टिस्ट को बुला के उन लोगों ने ड्राइवर में बिठाया होगा तो वो मुझे अंदर से ऐसे दिखा रहा था कि ए क्या कर रहे हो. Naveen तो हमेशा से AIB sketches का स्टार रहा ही है. Super talented and all three of them are like constantly suggesting how to make the scene better. हो रहा चैनो मुश्किलों में है बदन just jump and you cut it there Keep some distance from Tanmay हल्का असिस्टेंट रोलिंग Tanmay के साथ always I enjoy scenes in which there is a lot of scope for improvisation because Tanmay gets the best out of it. Like the GD scene you see, all because Tanmay वहाँ से बोला अच्छा ये वाला दो. Now you talk like this, now you talk like that. He actually gets into our minds, and that's why the scene is so funny. वीडियो शूट के अंदर वीडियो शूट और उसका वीडियो शूट Like a lot of times Tanmay would come and say because Tanmay is not from engineering. So he would come and ask, "ये गिरीश तेरे को पक्का है क्या ये होता था? तेरे को पक्का है क्या? शैक से पूछना है क्या? एक बार शैक से पूछ ले. एक बार शैक से पूछ ले होता था कि नहीं होता?" So I'd be like Tanmay ये होता था. ये हमारे कॉलेज में होती है, हर इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है. Like when we started working on this, no, we didn't know that Girish and Vishal also were engineers. विशाल मोस्टली हंसता रहता है, तो जान फूकनी पड़ती है. दीदी के साथ भी ये मेरा पहले ही स्केच था और हमने ऐसा 6 महीने ऐसा न्यू ईयर से लेके वैलेंटाइंस क्रॉस किया फिर हमने होली क्रॉस किया तुमने ना जाना कि मैं दीवाना लेकर आया हूँ. उसके मुंह में फैन है अभिजीत के. मैं बैंगलोर से आया था सीधा and then I went to Parur. फॉर्मल जूते शर्ट पहन के फ्लोर पे दौड़ाता है फिर उस फ्लोर पे दौड़ाता है मुझे लगा हो गया फिर बोलते हैं नहीं सेम शॉट मैं ऊपर वाले फ्लोर से लेने वाला हूं Girish took 15 retakes just to get the right
kind of balance in the way Varun's running, and that's only incredible directors can get that out. Because your flight landed at 8. So we had to do that first. That was supposed to be in the middle of the day. So Kumar, he's समझ गया ना? As always. Exactly. Girish actually looks like Henry Cavill. Let us know in the comments if you think Girish looks like Henry Cavill. I love Max. Max मेरे dad थे Honest Weddings में. He's tech interview guy. I love working with Max. The third Honest part of the Honest series, and just like it's in my well, there's no formal contract about being a part of the Honest series, but I'm just proud to be there. So thank my dog Tommy for this Oscar and my watchman Bahadur. Thank you. इन चीज़ों में मैं सडनली कमिटमेंट टू एक्टिंग क्यों याद करता हूँ? नहीं, और एक टेक नहीं, रीटेक नहीं होगा. एक सेकंड, और सिर्फ ऑडियो टेक चाहिए ना? चल मैं वहाँ की देखो. I remember narrating the speech to Tanmay for the first time, and the moment he heard it, he was like, you know what? This is going to be compared to Pyar Ka Panchnama. So how the final monologue came about, I remember in my engineering college, maximum students were from small towns, and there was this really small group of students that were from convent schools. And it was very evident that the anger that came from small town students was against privilege. So this needed to come out in a very strong way, and I felt the best way to do that without sounding preachy was to tell Average's backstory through the speech, where he could finally say that, you know what, hey, this is where I came from and this is the school that I went to. It's not my fault. Plus, when I finally come to this engineering college, you're not helping my case. So we felt, that comedy से नहीं चलेगा, ये तो boss monologue करना ही पड़ेगा इसके लिए. That day we also shot the guitar scene where Naveen needs to smash the guitar, and Rahul and Varun riled him up more than required. So Naveen पागल हो गया. So Naveen started shouting. There was no need for all that riling up. The scene cuts and I realize I've lost my voice. Fuck. That's it. और वो ऐसे बात कर रहा है. Girish was like, यार कुछ कर. तो मैं I was like गर्म पानी पी रहा था and I was like ginger and stuff. Thankfully we got that. We pulled it off and Naveen pulled it off amazingly well. Do I have the potential to be a slave of your esteemed organization? I am creating this video and I am dedicating this video to all India Bakchod. कहने को तो स्कूल इंग्लिश मीडियम था, लेकिन वहाँ टीचर भी हिंदी बात करते थे. हमारे स्कूल के लड़के एक दूसरे से यो व्हाट्स अप डॉग ऐसे करके बात नहीं करते हैं. क्या भौंक रहे थे लंडा आजकल? किसी तरह रट्टा मार मार के 10th तक पहुंचे तो पता चला कि जिंदगी में सफल होने के लिए एक ही तरीका है और वो है इंजीनियरिंग. सभी के माँ बाप टीचर लोग यहाँ तक कि गली का वॉचमैन भी हमसे पूछता था, और भैया कैसे चल रही है तेरी? तुझे क्या करना? ये हमारे स्कूल के बच्चे हम सब पहुंच के बकरों की तरह. मैं IIT, मैं NIT, मैं. अरे महीनों तक मेकअप करना भूल जाते हैं हम लोग. ये देखो. क्या मैं आपके मल्टीनेशनल कंपनी के लायक हूँ? Do I have the potential to be a slave of your esteemed organization?